Okay, let's go to the next program. Write a program to sort a given set of n numbers in ascending order. Or you can say write a program for implementing bubble sort algorithm. So over here, what we are required to do is we are required to learn how to sort a given set of data. See, sorting का मतलब होता है arranging the data in ascending order, right? Or in a particular sequence. So that is what is sorting. देखिए, sorting हो गया, searching हो गया, they are integral part of any application design. आपका कोई application कभी बन ही नहीं सकता है जिसमें sorting और searching नहीं हो रहा हो. ऐसा होता ही नहीं है, ये possible ही नहीं है, हाँ? So this is something which is exceptionally important in terms of practical programming. Now what I'm going to do is I'm going to first take up an example. वो example देख के you understand पहले कि how exactly this bubble sort technique works, और उसके बाद then we will look at the codes. If you can understand the example, code आ जाएगा. अगर example नहीं आ रहा है, there's no ways that you're going to get this code as well. Right? This section is not going to be too long, but it's going to be very, very, very important going further into programming. Now observe this. Now, what I do here is observe. I'll take some values and just observe पहले कि sorting होता कैसे. Just understand the technique. बाद में बात करेंगे कि उसका result कैसे आ रहा है. Now suppose I'm going to work with, say, how many values? 7 values over here. So I'm working with n as 7. Let me take some values randomly. Suppose this is the value 12. This is 8. This is 16. This is 5. Say 48. This is 24. And say this is 3. Suppose these are the values that I am required to sort. Now understand, look at this approach carefully. Bubble sort is a comparison exchange based algorithm. मतलब वो क्या करेगा? How does bubble sort work? Comparison and exchange. Bubble sort का simple सा फंडा है. Observe. All I'll do is पहले ना इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 पे जो वैल्यूज है उनको कंपेयर करने का, फिर 1 और 2 का वैल्यूज, फिर 2 और 3 का वैल्यूज, सीधा खाली बाजू का जितना वैल्यूज है ना उनको कंपेयर करते जाने का है. सो दैट इज व्हाट इज द फंडा बिहाइंड बबल सॉर्ट, दैट यू विल हैव टू कंपेयर द वैल्यूज इन कॉन्जिक्यूटिव लोकेशंस. अब देखिए मैं कैसे कंपेयर करता हूं. प्लीज जरा बहुत अच्छे से देखना. यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, जस्ट ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड, एंड देन लेटर ऑन यू विल राइट डाउन एवरीथिंग. प्लीज ऑब्जर्व. Now what I do is I'll first compare these two values. पहला दो values 12 and 8. इसमें 12 पहले आ रहा है, 8 बाद में आ रहा है. Now please understand, for the sequence to be in ascending order, 12 has to come before 8 ना, right? Sorry, 8 has to come before 12 ना. 8 छोटा है तो 8 पहले आना चाहिए. See, I don't know currently what is the exact position of 12 or what is the exact position of 8. लेकिन एक बात तो पक्की है, if I have to get this data in ascending order, 8 has to come before 12, so I'll swap. So मैं क्या करूंगा, अभी इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर किया, मेरे को दिखा कि सीक्वेंस गड़बड़ है, so I'll swap. तो 8 इधर आ गया, now 12 is trying for this place. ठीक है, now इधर 12 है. Now I'll compare these two, right? So 12 and 16. Right? 12 and 16. For the sequence to be in ascending order, 12 has to come before 16. So this sequence is proper. So 12 stays where it is. 16 comes over here. So अपन ने पहले 0, 1 को कंपेयर किया, फिर 1, 2 को कंपेयर किया. अब मैं क्या करूंगा, 2, 3 को कंपेयर करूंगा. इट्स इन द सेम एरे. 2 पे क्या है 16, 3 पे क्या है 5. When I compare 16 and 5, for this sequence to be in ascending order, 5 has to come before 16. So this sequence is improper. तो improper है तो मैं क्या करूंगा, मैं स्वैप करूंगा. जब मैं स्वैप करूंगा तो ये 5 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा और 16 इधर चला जाएगा. फिर मैं इंडेक्स 3 और 4 कंपेयर करूंगा. 16 and 48. For the sequence to be in ascending order, 16 has to come before 48. So ये सीक्वेंस प्रॉपर है, so no change. So 48 stays here only. अब इंडेक्स 4 और 5 का वैल्यूज कंपेयर करेंगे. 48 and 24. For the sequence to be in ascending order, 24 has to come before 48. So this sequence is improper. So हम इसको स्वैप करेंगे. ये क्या होगा यहाँ पर ये 24 इधर आ जाएगा and 48 is trying for this place. Then what I'll do is I'll compare 5 and 6 का data. Now I'll compare 5 and 6 का data. 48 and 3. For the sequence to be in ascending order, 3 has to come before 48. So this sequence is improper. So I need to change. What will happen over here is 3 इसकी जगह आ जाएगा. 48 क्योंकि बड़ा वैल्यू था वो बाद में आने वाला है, तो यहाँ पर 3 इधर आ गया.
what remains is 48. If you see in this sequence, whichever is the largest value that has come to its proper position, अगर आप देखेंगे तो 48 देखिए कैसे अपने proper position पे आया है. ये bubble sort की property है. What is bubble sort की property? That in each step, the next largest value will always come to its proper position. तो इस तरीके से अपन ने एक्चुअली किया क्या, अपन ने सिर्फ ना बाजू बाजू का वैल्यूज कंपेयर किया, दैट्स इट. सो बाजू बाजू का वैल्यूज कंपेयर करके हम लोग ये आंसर लेकर आते हैं. सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. नाउ आई विल कीप डूइंग द सेम थिंग. अब वापस से इन दोनों को कंपेयर करूंगा, इन दोनों को कंपेयर करूंगा, ऐसा बाजू बाजू के वैल्यूज कंपेयर करते जाने का जब तक कि आई डोंट गेट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. नाउ आई विल अगेन स्टार्ट 8 and 12. When I compare 8 and 12, for the sequence to be in ascending order, 8 has to come before 12, so sequence is proper, so no change. 8 stays here. 12 and 5. For the sequence to be in ascending order, 5 has to come before 12, right? So this sequence is improper. So 5 idhar aayega. 12 is now trying for this particular place. I'll compare 12 and 16. For the sequence to be in ascending order, 12 has to come before 16. So 12 goes here, 16 comes over here. 16 and 24. For the sequence to be in ascending order, 16 has to come before 24. So this is proper, so no change. I have 24 here, 24 and 3. For the sequence to be in ascending order, 3 has to come before 24. So 3 idhar aayega, 24 idhar gaya. 24 and 48. For the sequence to be in ascending order, 24 has to come before 48. So 24 says here, and this is 48. बस ऐसी अभी बाजू बाजू का वैल्यूज कंपेयर करते जाने का. नाउ आई विल कंपेयर दिस. अभी यहाँ पे कंपेयर करेंगे ये स्टेप में से. 8 and 5. For the sequence to be in ascending order, 5 has to come before 8. So this is improper. So swap. तो 5 इधर गया, अभी 8 इधर आ गया. I'll compare with the next index. 8 and 12. For the sequence to be in ascending order, 8 has to come before 12. So the sequence is proper. So no change. 12 and 16. For the sequence to be in ascending order, 12 has to come before 16. Proper. So no change. I'll compare over here. 16 and 3. For the sequence to be in ascending order, I need to get 3 before 16. So this is improper. So swap. So 3 idhar gaya, 16 bazu mein aa gaya, 4 index 4 mein. 16 and 24. For the data to be in ascending order, 16 has to come before 24. So this is proper. So no change, right? Then we have 24. 24 and 48. They are already in their proper position. They'll not move any which ways. अब देखिए हर स्टेप में whichever is the next largest value वो अपने proper position पर आ रहा है. ठीक है. Now I'll go over here. 5 and 8. The sequence is proper. 8 and 12. The sequence is proper. 12 and 3. 3 should come before 12. So this is improper. So sorry. 3 इधर जाएगा. Okay, so this is 3 इधर जाएगा अभी, right? 12 and 16 proper. 12 इधर आ गया. 16 and 24 proper. 24 and 48 proper. Then I'll go to the next step. 5 and 8. This is improper. This is proper, so no change. 8 and 3 इधर सीक्वेंस आपका इनकरेक्ट है, ये दो स्वैप हो जाएंगे. 8 and 12 proper. 12 and 16 proper. 16 and 24 proper. 24 and 48 proper. और क्या था, ये आ गया आपका 48. ठीक है. Now last step में I'll just compare this. So 5 and 3 when I'm comparing this, so swap हो गया. So this becomes 3 and 5. उसके बाद 3 and 5 था, ये स्वैप हो गया. उसके बाद आ गया 5 and 8. तो दिस इज प्रॉपर. तो 8 इधर आएगा. 8 and 12 प्रॉपर. अब आप देखेंगे ये सब कंपैरिजन में आपके जो वैल्यूज है वो प्रॉपर तरीके से आ जाएंगे. I'll just write it properly. So this is okay. So 5 and 3 को स्वैप कर दिया. तो लास्ट स्टेप में क्या आ गया, ये इधर 3 आ गया, फिर 5 आ गया. 5 and 8 जो है प्रॉपर था, तो 8 इधर रहेगा. बाकी सब ऑलरेडी अपने प्रॉपर पोजीशन में है. इस तरीके से यू विल गेट योर आंसर. सो दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट स्टेप वेयर द डेटा विल नाउ बी सॉर्टेड. तो हमने यहाँ पर देखा बबल सॉर्ट बाजू बाजू का वैल्यूज कंपेयर करता जाता है. ऐसा तब तक कंपेयर करता है जब तक कि उसको फाइनल आंसर नहीं मिल जाता. राइट, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. डिड आई मिस अ वैल्यू? 3, 5, 8, 12.
16, 24 and 48, not 28, it is 48. इस तरीके से I'm going to get my answers. ठीक है? Now also if you see n का value था 7, there were 6 values. I got my answer in how many steps? This was step number 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 and this is 6. ये bubble sort की property है. If there are n values, you'll always get your answer in n minus 1 steps. So this is how bubble sort is going to work. So all I need to do is I need to keep comparing consecutive values, and whenever the sequence is incorrect, I will swap them. दो चीजें हमको समझी in bubble sort. In each step, the next largest value will always go to its proper position. And second is, if there are n values, you'll always get your answer in n minus 1 steps. Right? Now, what you'll do is you'll first take down this example. ये example आप लिख लेंगे पूरा, और उसके बाद then I'll go to the code. You need not draw the arrays as such. आप खाली numbers भी लिखेंगे तो भी आपको उसमें से समझ में आ जाएगा. चलिए इतना लिखेंगे प्लीज. Okay, let's now go to the code part of it, the coding part of it. This is one of the most important loops that you have. और इसकी जरूरत हमेशा पड़ती ही है. Now observe this. Now main function remains the same like what we mentioned earlier. अपन ने array read किया है, array ये function को pass कर दिया. Now this function is going to sort the data for us. ये sorting का function है. Now understand, for implementing bubble sort, I'm going to use 2 for loops. Now please understand the purpose of each of these for loops. Now observe this. क्या हुआ? Now in this step we saw, अगर n values थे तो I got my answer in 6 steps. Sorry, n अगर 7 था, 7 values थे तो I got my answer in 6 steps. तो अगर n values है तो I'm getting my answer in n minus 1 steps. So bubble sort का solution implement करने के लिए I have to make sure that n minus 1 steps are generated. ठीक है? So I want someone in the program who can control or who will ensure that n minus 1 steps are generated, and that is what my first for loop it will do. मेरा ये जो first for loop है, ये first for loop n minus 1 times repeat हो रहा है. Why is this first for loop repeating n minus 1 times? This first for loop is repeating n minus 1 times so that n minus 1 steps are generated. अब as an example, हमने n का value अभी ये example में क्या लिया था? 7. So observe this. I'm starting with I as 0 and n minus 1. n minus 1 होता है 6. Now I've written I less than 6. मतलब ये 5 तक जाएगा. So if I count 0, 1, 2, 3, 4, तो बराबर 5 times repeat करेगा. The point is, my first loop is repeating n minus 1 times. Why is my first loop repeating n minus 1 times? My first loop is repeating n minus 1 times so that n minus 1 steps are generated. Now, so n minus 1 steps तो बन गए, लेकिन देखिए हर स्टेप में I have to make some comparisons. अपन जरा देखते हैं कि हम लोग हर स्टेप में कितने कंपैरिजन करते थे. देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? We compared index 0 और index 1 का वैल्यू, बाद में index 1 and index 2 का वैल्यू, index 2 and 3 का वैल्यू, index 3 and 4 का वैल्यू, index 4 and 5 का वैल्यू, index 5 and 6 का वैल्यू. तो हर स्टेप में कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंपैरिजंस आए. तो मेरे को समझ में यह आया कि though there are n minus 1 steps, in each step I'm required to carry out n minus 1 comparisons. So I want someone in my program to ensure that my program generates n minus 1 comparisons, and that is why if you see even my second for loop is repeating n minus 1 times. अगर आप दोनों for loop ध्यान से देखेंगे, I वाला loop as well as j वाला loop, ये भी n minus 1 times repeat हो रहा है, ये भी n minus 1 times repeat हो रहा है. Why are each of these for loops repeating n minus 1 times? The first for loop is repeating n minus 1 times so that n minus 1 steps are generated. The second for loop is repeating n minus 1 times so that n minus 1 comparisons are made in each step. ठीक है, बट अभी अपन ये देखते हैं कि n minus 1 comparisons करते हुए हमको करना क्या है. सी अपन कुछ कंपैरिजन कर रहे थे, वो क्या है जरा हम लोग अभी यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं. जस्ट इरेज दिस आउट अ बिट. आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर. ओके, now please observe. See, I'm comparing bazu का value. So understand, if this is say value at index j, उसके बाजू वाला जो index है, it will definitely be index j plus 1. Can I say I need to compare the value at index j in array A with the value at index j plus 1 in array A?
if the value at index j plus 1 in array A is less than the value at index j in A, तो you swap these two values ना. आप कोई भी इंडेक्स अगर j लेंगे तो j plus 1 तो उसके बाजू वाला ही इंडेक्स होगा ना. So I need to compare the value at index j with the value at index j plus 1, and whenever needed, we need to swap them. तो अपन ने क्या किया है? If the value at index j is greater than the value at index j plus 1, you swap them. क्या किया? पहले a of j का वैल्यू temp में रख दिया, a of j plus 1 में जो वैल्यू था वो j में कॉपी कर लिया, a of j में, एंड temp का वैल्यू a of j plus 1 में हमने कॉपी कर दिया. So this is your swapping वाला logic, which again we've seen earlier. So this is how we will implement bubble sort algorithm. So the two for loops are repeating n minus 1 times each. First for loop इसलिए n minus 1 times repeat हुआ, so that n minus 1 steps are generated. Second for loop इसलिए n minus 1 times repeat हुआ, so that n minus 1 comparisons are made in each step. And whenever I compare consecutive values, if पहला वाला value is greater than the दूसरा वाला value, you will swap them. So this is precisely your bubble sort का logic. Once this loop is completed, you will have the data sorted. You'll just display the array the way you normally do, and it will display the sorted array. So this is how you will sort a given set of n numbers in ascending order. अगर descending बोला ना, तो all you have to do is you have to replace this sign, right, with a less than sign. You just need to reverse the sign. It will give you the data in descending order.